Anji, good morning everyone. Today 24th of July 2021 for the third part from the chapter Rulers and Building, that is Garden, Tombs and Pots. Garden, Tomb and Pots. This we have, ठीक है? और इसमें हमने देखना है कि किस तरह से उन्होंने मुगल पीरियड में टाइम में लाइक चोला एम्पायर से के टाइम पर यानी कि न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के टाइम पर दिल्ली सल्तनत टाइम पर हाउ द न्यू किंग्स एंड हाउ द रूलर्स हैड मेड द गार्डन्स देयर डॉम एंड देयर फोर्ट्स डॉम्स एंड फोर्ट्स किस तरह से उन्होंने बनाए. So look at your page number 66. 66 से आज हमने स्टार्ट करना है. This is the fourth section of our chapter. Under the Mughals, architect become more complex. मुगल्स के टाइम पर, मुगल से पहले जो आर्किटेक्ट था वो बहुत सिंपल था, लेकिन मुगल्स जब 1526 के बाद आए, जहांगीर के टाइम, शाहजहां के टाइम, उन्होंने ये आर्किटेक्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स कर दिया और बिल्कुल डिफरेंट कर दिया. As the Akbar rulers, सारे के सारे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, especially Jahangir, they had made their special emphasis on the literature part. अगर हम literature part की बात करें तो आपने इन्ने अकबरनामा जो अबुल फजल ने लिखा था उसको याद रखोगे. अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, उसको 3 फेजेस में लिखा था. पहला उसके एंसेस्ट्रल के बारे में था, दूसरा उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में था, रीजन के बारे में, और तीसरा उसका इन्हे अकबरी था जिसमें उसने सारे अपने रिलीजन्स, पॉलिटिकल सेक्टर और अपने सारे के सारे जो भी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थी वो लिखी थी सारी इन्हे अकबरी. सो वो लिटरेचर, उस टाइम का आर्ट, उस टाइम का आर्किटेक्ट, that was being depicted by them in their autobiographies. Now here the word is autobiography. What is autobiography? A content of a own person, अपने बारे में लिखी हुई कथा. A writing content for a person belonging to himself. अपने बारे में लिखी हुई कथा, अपने बारे में लिखा हुआ text which can give the information to the next generation. Anything which is written by a person for himself in the form of writing text, that we can say it as a autobiography. So autobiography जो है, that was being given, like Babur has also described the interest in the planning. बाबर ने, सबसे पहले बाबर आया था भारत में in 1526 by depicting Abraham Loti. He came over here. So Babur had described his interest in planning and layout formal gardens. उसने किसके ऊपर emphasize किया? He has given more emphasis on the formal garden, places with the rectangular walled, enclosed and divided into 4 quarters by artificial channels. Artificial channels means water divide. You can say इस तरह से, मैंने आपको शायद उस दिन भी बना के दिखाया था. It has made this type of division which was giving artificial divide इस तरह से. यहाँ वाटर चैनल्स, ठीक है, और यहाँ पर जो है गार्डन या बिल्डिंग्स. इस तरह का डिवाइड जो था, आर्टिफिशियल चैनल्स के साथ डिवाइडिंग एंड बिल्डिंग्स जो था वो क्रिएट होता था. These gardens were called as Chahar Bagh. Now underline this term, Chahar Bagh means dividing the garden into the 4 sections. Chahar, चार से चहार. Bagh means ये भी garden, ये भी garden, ये भी garden, ये भी garden, बीच में pavement और fountains. ऐसा हमने जब भी हम ताजमहल देखा होगा तो वहां आपने देखे होंगे. निशांत पार्क अगर कश्मीर में, श्रीनगर में गए हो वहां पर देखा होगा, ठीक है, निशांत गार्डन. सो ये सारे जो है दे आर फॉर्म्ड लाइक इन दिस सेम स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड चहार बाग. 1 mark question. So Chahar Bagh, 4 garden because of their symmetrical division into the quarters, beginning by Akbar. Who introduces Chahar Baghs in the Mughals?
Who introduces Chahar Bags in the Mughals? किसने किए थे? That is Akbar. Some of the biggest, most beautiful Chahar Bags were constructed by Jahangir, Shah Jahan in Kashmir, Agra and Delhi. शाहजहां ने कश्मीर में, जिसका मैंने निशांत बाग का नाम दिया. There were several important architect innovation during the Akbar's reign. अकबर के टाइम पर बहुत सारे इनोवेशंस हुई. लाइक अकबर ने न्यू रिलीजन बनाया, सुल्क कुल. अकबर ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बनाई. सो इंस्पिरेशंस अकबर आर्किटेक्ट टर्न इनटू द टॉम ऑफ सेंट्रल एशियन एंसेस्टर्स. अकबर के टाइम पर टॉम्स भी बहुत अच्छी बनी. तैमूर, the central tower dome and the tall gateway Pistak. अब यहाँ अंडरलाइन कर लिया. What is Pistak? Pistak means a tall gate. Look at this page, figure number 11. The tomb of Humayun. Tomb of Humayun, constructed between 1526 to 1562 to 1571. Here you can see the mid gate is very big. Tomb of Humayun picture देखिए, वहां आप देखिए, the gate is very big. So that central towering dome, central में dome बना हुआ है. If you can see, this building is like a state, and a dome is there, big dome, and a big gate is also there in that building. So this type of structure is there. I'm not so good in different, you can say, drawing. So this type of big tombs are there. So this is what? The central towering dome and tall gateway. So this tall gateway is called Pistak. Pistak. Underline kar loge. It was being started by Akbar. अकबर ने हुमायूं की टॉम बनाई. टॉम मतलब कब्र होता है जहां उनको दफनाया जाता है. मुस्लिम्स में कभी भी जलाया नहीं जाता है ह्यूमन बॉडी को आफ्टर द डेथ. So that become the aspect of Mughal architecture first visible in Humayun tomb. सबसे पहले पिस्ताक हमें कहाँ मिला? Where we got the Pistak first? That is Humayun tomb, which is being formed by Akbar. Is it okay? Any doubt to anyone? Excuse me, ma'am. बोलो. मैम इतने बड़े वे बनाने का फायदा क्या होता था? बेटा, they want to present and demonstrate themselves as a superior and a good kings. They want to give their honor to the person who is no more in that and they were not existing. Give their you can say good gestures. That is why tombs were being constructed. Humayun की tomb देखी है? That is very big. ये आपको इसमें पिक्चर में दिखी मैम रही मैं है. टॉम्ब की नहीं बात कर रहा, जिसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है ना, गोल सा. वो स्ट्रक्चर क्यों बनाते थे? बिकॉज दैट दे वांट दैट. आज की डेट में भी हम देखने जाते हैं. So that the generation to generation can recognize them. Otherwise हुमायूं के टाइम पे और बहुत बंदे होंगे और बहुत राजा होंगे कि हम उनके बारे में इसमें पढ़ रहे हैं. Something they have done in the innovative way, something they have done in the creative way, something they have done in a different way. That is why we are reading and learning about them. That is why we are discussing about them. Okay. Rishabh, are you getting my point? हम उनके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं? Because they have done something very different. Usually तो everyone is living, eating, sleeping, working for themselves. अगर कोई काम कर रहा है, they are doing for themselves, not for others. These kind of मतलब different work has been done by that kings, which are still being recognized by us, which is still being recognized by the world, we can say. Is it okay, Krishna? Yes, ma'am. Thank you, Bache. So the tomb architect first visible in Humayun tomb. The tomb was placed in the center of a huge formal Chahar Bagh. अब टॉम्स के पहले क्या होता था? कोई भी मुगल्स की बिल्डिंग ले लीजिए, उसके पहले गार्डन आएगा, बाद में बिल्डिंग स्टार्ट होगी. पहले गार्डन आएगा, बाद में बिल्डिंग स्टार्ट होगी. So a garden was divided into 4 parts. That is why it is known as Chahar Bagh. ठीक है? So the next is the Chahar Bagh and the built in the tradition
known as eight paradise or Hast Behist. The central hall surrounded by eight moon. हर कंस्ट्रक्टेड मटेरियल की कौन सी खासियत थी कि उसके एक सेंट्रल मटेरियल, एक सेंट्रल हॉल है, उसके आसपास 8 रूम्स है और बाहर क्या है, चार बाग है. So these kind of architectural design was unique during the Mughal period. Then it was during the Shah Jahan, the region was different element of Mughal's art. There were fused for the grand harmonious. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने halls बनवाए, दीवाने आम and दीवाने खास. दीवाने आम for the discussion when the king is going to make with the common people, and दीवाने खास with the meetings of their different ministers on the formation of administrative policies. So दीवाने आम different hall, दीवाने खास different halls, they were being constructed very carefully planned and described in Chihil's Saturn or 40 pillars hall. और उसमें हर हॉल में 40 pillars means pillars लगे होते थे, so that the construction of the building or the building content will remain very open. सिर्फ छत होती थी, 40 pillars, and that type of structure was being made at that time, which was known as दीवाने आम and दीवाने खास. शाहजहां, थर्ड पैराग्राफ में जा रही हूं मैं. शाहजहां ऑडियंस हॉल was specially constructed to resemble the mosque. शाहजहां ने अपने हॉल्स जो बनाए वो बनाए उस तरह की जैसे कि मॉस्क्यू हैं, and they pedestal on which the throne was placed frequently described as qibla. हमने लास्ट चैप्टर में किबला किया था. Anyone remember what is qibla? Yes, Prachi, I can see. Prachi, if you know, please unmute. किबला याद है? Yes, Nimrat. Ma'am, Muslim Qibla is the direction of Muslims prayer. Ma'am, the direction in which Muslims pray. where they Very pray. nice. When the Muslims were doing their prayer by making their direction toward Makkah side. So that is called as a Qibla. So all the mosques, there was a separate place for Qibla was being made in the center. So that was being a Qibla, direction of Muslims at the prayer, which everybody faced in the direction when their court was in a session. Court जब session में होगा तो वो सिर्फ Qibla बना हुआ कि उसी direction में देखे, so that no wrong decision can be made. So the connection between the royal justice, अब देखो यहाँ पर connectivity बता रहे हैं कि the king will make the justice by making the connectivity with God, with the religion. So between the royal justice and the imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed fort in a Red Fort in Delhi. Now, who constructed Red Fort? There was a question asked by one person to me. So this is the answer for you, beta. That is, a newly constructed Red Fort was constructed by whom? That is by Shah Jahan. So the empress throne was where? Petra Dora. Petra Dora क्या है? Petra Dora क्या है? That is a colored hard stone placed in the depression and carved into the marble sandstone. आप अगर देखा होगा कहीं, अगर आप रेड फोर्ट में गए हो या ताजमहल में देखा होगा, मार्बल के अंदर कलर्ड कार्विंग हुई होती है. मार्बल के अंदर कलर्ड carving, colored picture, flowers, designing that has been done, carved into the marble and sandstone, creating a beautiful ornate pattern. Ornate pattern में यानी कि flowers, leaves, then flowers, leaves, इस तरह से वो pattern बनाते हैं. That is called Petra Dora. So this kind of unique, different kind of architect, different kind of style was being formed during the Mughal period. In the early year of region, उस early time पर Shahjahan's capital was at Agra. Shahjahan के time पर which was the capital, Delhi or Agra? MCQ. During the Shahjahan's time, Agra. आगरा. और याद रखने का तरीका क्या है? ताजमहल उसने आगरा में ही बनाया था. याद रखने का तरीका क्या होगा? ताजमहल उन्होंने आगरा में ही बनाया था.
The city were notably constructed for their homes on the bank of river Yamuna. They had constructed their homes near the bank of river Yamuna, and these were sent to the midst formal garden constructed as Chahar Bagh. Every building was having Chahar Bagh. This is very much clear. I think it is very much clear to you, beta. कोई doubt तो नहीं है कृषिव, प्राची कोई doubt तो नहीं उत्तर जी? So No, Chahar ma'am. Bagh gardens also had variation that historian described in the riverfront garden. Chahar Bagh कहीं पर भी बनाए गए वहां पर बनाए गए जहां रिवर साइड डायरेक्शन है. अगर आप निशांत बाग की भी बात करो, शालीमार बाग की बात करो, तो वो भी रिवर साइड या लेक साइड फ्रंट व्यू है और फोर्ट पार्ट डिवीजन है. और अगर आगरा के रेड फोर्ट की बात की, आगरा के ताजमहल की बात की जाए तो दैट इज ऑल्सो हैविंग at the back river Yamuna. So this dwelling is not located in the middle of Chahar Bagh, but its edge close to the bank of the river. कोई भी उन्होंने अच्छी से अच्छी कंस्ट्रक्टेड साइड की है तो वो आसपास वाटर बॉडी के आसपास ही उन्होंने करने की कोशिश की. Shahjahan adapted the riverfront garden in the layout of Taj Mahal. The garden, grandest architectural accomplishment in his region. Here, the white marble mausoleum was placed to the terrace by the edge of river, and the garden was of its south. हमें पता है रिवर जो है उसके बैक पे है और गार्डन जो है उसके फ्रंट पे है. Who has visited Taj Mahal? Otherwise, you might be you had seen it in the picture, or you can see it on the figure number 13. Very good, very good. Ayush, you had also visited. That's very nice. So Taj Mahal, उसके back पर river Yamuna है, आगे Chahar Bagh है और बीच में water body है. Now you can see here on page number 17, there are two figures which is depicting the model layout of Delhi and Agra, which is showing the river route, river Yamuna route, in which near the river Yamuna route, you can see all the constructed sections are there, all buildings are being constructed, so that the beauty of that river can be seen by every minister. जो उनके मुगल्स के टाइम पर जो मिनिस्टर्स थे, जो हायर ऑपोजिशन फैमिली पर्संस थे, दे कैन विजुअलाइज, और उनके हाउसेस जो थे, उनके जो महल्स थे, उनके जो फोर्ट्स थे, वो सभी उन्हीं के किनारों पर बने हुए थे. यू कैन सी इट ऑन फिगर नंबर 14. Then on figure number 15, it is also showing Delhi, Shahjahabad, Yamuna river के आगे 1850 के टाइम पर. So this type of structure was being developed in the form to control and assess the nobles. Nobles सारे के सारे river के बिल्कुल किनारों किनारों पर रहते थे, so that administration के अंदर कोई भी problem आए तो उनको पता चल जाए. ठीक है, रिवर के कारण या उधर से कोई कारण, और उनका व्यू भी अच्छा रहे. और आप देखिए यहाँ फिगर नंबर 14 में ताजमहल आपको प्रॉपरली ले आउट हो रहा है कि हाउ द टर्निंग पॉइंट ऑफ रिवर यमुना इज बीइंग शोन, एंड ऑन द दैट साइड all the constructed elements are being shown, which are showing different you can say forts or different buildings of that time where the nobles were living. So this kind of construction was there in Shahjahanabad, old name of Delhi. Shahjahanabad, that they constructed in Delhi. Is it okay? This was the old name of Delhi, Shahjahanabad. Imperial palace commanded the riverfront. Only specially favored noble like eldest son Dara Shah were given access to the river. All other had to construct their home in the city away from the river Yamuna. बाकी सबको कोई अलाउड नहीं था कि रिवर यमुना के किनारे पर रह सके. सबको असेस नहीं था रिवर के अंदर जाना भी. Is it okay? I hope this gardens, tombs and forts are very much clear to you. If it is clear, please give thumbs up so that I can proceed further. Okay, beta. Thank you, Puttar. Thank you. Now, lower your hand. Region and empire. Now, region and empire. The construction. अब मैं next part start कर रही हूँ. Region and empire. के लिए
The construction activity increased from 8 to 18. 8th century से लेकर 18th century तक का construction जो था इंडिया के अंदर in the form of forts, in the form of gardens, in the form of you can say tombs, in the forms of different architect design, wells, tanks, that was in a great speed. हम लोग ये कह सकते हैं कि 8th से लेकर 18th सेंचुरी तक मेडिवियल जो हम लोग इंडियन हिस्ट्री जो कि हमारे 7th का कंसेप्ट है, मेडिवियल हिस्ट्री में ये कंस्ट्रक्शन कंटेंट जो था दैट वाज इन द स्पीडी वे, दैट वाज इन द फुल मोशन वे. सो द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वाज अडॉप्टेड बाय अदर. हर एक पर्सन, हर एक राजा, द सक्सेसर ऑफ द प्रीवियस वाज, प्रीवियस का सक्सेसर जो भी आता था, बाबर के बाद हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, शाहजहां आया, ठीक है, इस तरह से जितने भी आए एक दूसरे के ऊपर, दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ एज सुपीरियर. एंड ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड ऑफ टाइम, जो भी एक दूसरे का, तुगलक के बाद लोधीज आए, वो भी सारे आए, ये सारे क्या कर रहे थे, दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ सुपीरियर. दैट इज व्हाई फ्रॉम 8th to 18th century construction mode, architectural mode, that was in the great speed. So like Vijaya next sorry line shift kar gayi. The tradition of the region was adopted by one another in Vijayanagara. For example, the elephant stable of rulers were strongly influenced by the style of architect found adjacent the Sultanate of Bijapur and Golconda. अगर बीजापुर और गोलकुंडा के बारे में हम लोग देखें तो वहां पर एलिफेंट टाइप स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिलते हैं. लाइक वी विल सी इट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर्स. And Vrindavan near Mathura, temples were constructed in the architectural style that were also very similar with the Mughal palaces in the Fatehpur Sikri. The creation of large empire that brought different region under their rule helped the cross fertilization of artistic from the architectural style. अब देखो जो मुगल्स आए थे वो अरब कंट्रीज से आए थे, उधर से आए थे, तो उनका अपना स्टाइल था, अरेबियन स्टाइल था यहाँ पर. नाउ मिंगलिंग ऑफ 2 type or 3 type of culture was being developed here. So the Mughals rule were particularly skilled in adapting the religious architectural style in the construction of their own buildings. जबकि मुगल्स अपने स्टाइल से बनाते थे. बंगाल फॉर एग्जांपल, लोकल रूलर्स वर डेवलप द रूफ दैट वाज डिजाइन्ड टू रिजेंबल द thatched hut. नाउ लुक एट द thatched hut, डेकोरेटेड पिलर्स देखो बिल्कुल ऐसे फुटी स्टेयर्स जैसे, यू कैन सी thatched hut like in this way. Next, last page. So Bangla Dome, that is we will study in the next chapter. The impact of other regions was also evident. Capital of Akbar's Fatehpur Sikri. Maybe buildings show influence of the architectural style of Gujarat and Malwa. Means they were mingling the architectural style of other states also. Gujarat or Malwa region के जो architectural style था, they were demanding that also. Please fill your attendance in the meanwhile. So even though the authority of the Mughals की authority, they have in the 18th century, the architectural style was developed under the patronage of constantly used, adapted by the rulers when they tried to establish their. जब वो अपना राज करना चाहते थे, they want to prove themselves as the superior, as the different, and want to make acknowledged by the common people. So they had developed architectural style of patronage. Constantly it was different from one to another. And mingling with the Gujarat and Malwa, और अगर हम बंगाल वाली साइड में देखें तो वहां पर thatched hut जैसा जो है कंस्ट्रक्टेड मटेरियल जो है वो हमें देखने को मिलता है. कोई डाउट? बीजापुर गोलकुंडा में हमें मिलता है एलिफेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिलता है. कोई डाउट बेटा जी? है कोई डाउट? No, ma'am. इस चैप्टर में बेसिकली हमने कोई भी बैक एक्सरसाइज नहीं करनी है. हमने क्या करना है, टर्म्स करनी है. दैट आई विल सेंड यू टर्म्स, और उसमें हमने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करने हैं.
सोर्स बेस मींस पैराग्राफ होगा, उसके नीचे 2-3 क्वेश्चंस होंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बीच में ही आपको फ्रेम कर करके बता दिए हैं। इन दैट वे क्वेश्चंस विल बी, so will you people will not face any kind of difficulty in completing and learning the content, because whatever the paragraph will be taken out, that will be considered, and you will be able to do. ठीक है? Any doubt to anyone? Excuse me, ma'am. Just wait. हाँ जी बेटा जी।